Hello, everybody. I hope you are. I hope my voice is clear to you. So, चलो सभी लोग फटाफट आ जाओ. Please come, everybody, fast, so that I can start with the general pharmacology. So, as I promised you that every Sunday I am going to teach you totally free of cost. So, this is known as a Sunday to Sunday batch for GPAT Niper Drug Inspector and Government Pharmacist exam. So, अभी पढ़ाई का लोड मत लो. ठीक है, आपके पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं है, डजंट मैटर, आपको सब कुछ अवेलेबल है. फंडामेंटल फार्मेसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है. इवन मैं अभी लास्ट ईयर के जो मेरे पेड सेशन के जो वीडियोस है, लास्ट ईयर के जो पेड सेशन के वीडियोस है, so whatever paid videos of last year, recorded videos of last year batch, that GPAT 2023 batch, whatever videos was there, so those videos I am going to upload here day by day. So don't worry about that. If you don't have money to join any expensive classes, any useless classes, so don't worry about that. So everybody can learn from this YouTube channel. Okay, so I am going to upload all the previous videos, all the previous recorded videos of previous year. GPAT 2023 के जो जितने भी chapter wise, subject wise videos है, around 300 videos are there. So I am going to upload free of cost on our YouTube channel. And I just want your support. आपको अगर support मिलेगा तो definitely ये सब possible हो जाएगा. आपको free of cost पढ़ाना है मुझे, और free of cost ही पढ़ाऊंगा मैं आपको. So if you want all the previous years chapter wise videos, please type yes in the comment box so that I will upload as soon as possible. ताकि आप सभी को उसका बेनिफिट मिल सके, आप सभी को उसका फायदा हो सके. क्योंकि वो जो वीडियोस है उतना मैटर, उतना एक्सप्लेनेशन आपको कोई भी नहीं देगा, इसकी गारंटी मेरी. ठीक है, क्योंकि हर एक को अपना अपना बिजनेस देखना है. आई डोंट वांट टू डू द बिजनेस. ओके, मुझे बिजनेस नहीं करना है. एट द सेम टाइम मुझे भी अपना लाइफ गुजारा करने के लिए मुझे अपना रेंट देना पड़ता है, मुझे भी अपना एक्सपेंसेस होता है, मुझे भी अपना वेजेस होता है. सो आई यूज्ड टू टेक अ लिटिल अमाउंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. जो मेरा अभी जीपैट 2024-25 का ऑनलाइन बैच है, उसका मैं फीस लेता हूँ ऑब्वियसली. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. So welcome everybody, and even you can write in the comment box whether I am audible you perfectly or not. If I am audible you perfectly, please write yes in the comment box so that I can start. Okay. So welcome everybody. Today we are going to start a pharmacology known as a general pharmacology, because this pharmacology is very important for your GPAT as well as Niper as well as drug inspector and government pharmacist exam. And believe me, at least 10 to 12 questions will be covered from just by watching these lectures, right, of general pharmacology. So general pharmacology is very important. As I have told you, general pharmacology is very important, and you can expect at least 10-15 questions from general pharmacology in a various kind of exam. सिर्फ जीपैट में नहीं आता है या फिर नाइपर में नहीं, बाकी ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, उसमें भी ये जनरल फार्माकोलॉजी का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम रिपीटिंग दिस इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बिकॉज दोनों ऑडियंस है तो दोनों को भी ये समझ में आना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल,
Very first, how to start the study of pharmacology. Pharmacology कैसे पढ़ना है? बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि जीपेट के लिए फार्माकोलॉजी मेजर सब्जेक्ट है, इसके लिए वो मेजर है, तो आपको फार्माकोलॉजी स्टार्ट करना चाहिए. तो आइडियली आपको फार्माकोलॉजी से स्टार्ट नहीं करना है. आइडियली यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद द फार्माकोलॉजी. आइडियली यू हैव टू स्टार्ट विद द एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बिकॉज physiology is very very important, and if you understand the physiology, then only you are going to understand the pharmacological part of that particular topic. Suppose if you have understood nervous system, parts of nervous system, physiology of nervous system, how there is a impulse generation in the nervous system, how there is impulse transmission in the nervous system, now what are the neurotransmitters. So obviously you can easily understand the topics which are based on the nervous system. What are the topics based on the nervous system in the pharmacology? So आपका फार्माकोलॉजी में पूरा ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस एक पूरा सेक्शन होता है जिसमें आपका जनरल एनेस्थेटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी साइकोटिक्स, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सब टॉपिक्स होते हैं, सीन स्टिमुलेंट, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स. These topics, if you want to understand, you have to understand the physiology of nervous system. Okay, so that's why I used to tell a lot of students wherever I used to go for the sessions. So you have to start with the basic subject, right? But general pharmacology is not dependent on the basic subject. Other topics definitely they are dependent on the basic subject. Okay, so I'm not going to explain you the physiology because it is the part which is not dependent on the physiology. Okay, so that's why. So first you should know what is meant by pharmacology. So first term, pharmacology. What is pharmacology? Say very simple. A lot of students they might know the definition of pharmacology. Pharmacology का definition क्या होता है? Pharmacology is nothing but the detailed study of drugs. It is a detailed study of drugs, particularly their actions on the living organism, organs, tissue or cells. Now these actions may be either beneficial or harmful. ये action जो है ये क्या हो सकता है? Beneficial भी हो सकता है, harmful भी हो सकता है. आप बोलेंगे सर आपको का सुबह सुबह भांग खा क्या होगी? ये beneficial harmful क्यों? आपको तो beneficial ही चाहिए. Obviously, no doubt you need only beneficial effect of drug, but drug may have both beneficial as well as harmful effect on the body. Okay, so pharmacology is nothing but the study of detailed study of drug, particularly their action on the living organism, cells, tissue, their absorption, distribution, metabolism, elimination, kinetics of that, dynamics. Okay, now these actions of drug may be either beneficial or harmful, but we are interested in the beneficial effect of drug. Suppose you are suffering from any pathological status, जैसे आपको बुखार हो गया या फिर आपका हेडेक हो गया, that is a pathological status. So in that condition you need a beneficial effect of drug. That's why we are studying this pharmacology, right? So first question of your GPAT or other exams that will be covered over here. So who is the father of pharmacology? Most of the बच्चों को मालूम नहीं होता कि फादर कौन है, ठीक है? Who is the father of pharmacology? वैसे तो बोलने में बोलते बच्चे तो बोलते रहते कि मैं तेरा बाप हूँ, है ना? मैं कौन हूँ? तेरा बाप हूँ. मैं नहीं तो कौन भाई? तू ही है. लेकिन फार्माकोलॉजी का फादर कौन है? Who is the father of pharmacology? Remember, Oswald Schmiedberg is the father of pharmacology. Oswald Schmiedberg. Oswald Schmiedberg is the father of pharmacology. You have to remember this name, Oswald Schmiedberg. So first question will be covered from your pharmacology. That is a who is the father of pharmacology? Oswald Schmiedberg. Okay. Now another. So I'm not going to explain you each and everything from this subject because we are not studying for the semester exam. We are studying for the GPAT exam. So whatever points which are important for your GPAT exam, GPAT के लिए, नाइपर के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जितना important है उतना ही पढ़ लें. फालतू बकवास थोड़ी करना है, ठीक है? So first definition. What is meant by pharmacokinetics? So इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. What do you mean by pharmacokinetics? So what do you mean by kinetics? So remember the fourth process that is known as the absorption, distribution, metabolism, and elimination. The process of absorption, metabolism, elimination, and so ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination. Okay, these processes they are known as a pharmacokinetics of drugs. Now, why they are known as a pharmacokinetics? See, it is also known as a study of absorption, distribution, metabolism, and elimination of drugs. Okay, and their relationship to
to the pharmacological response of drug. That is known as the pharmacokinetics. तुमको आपको याद कैसे रखना है? तो देखो, आपने जब ड्रग ले लिया, कोई टैबलेट ले लिया या फिर कोई कैप्सूल ले लिया, तो क्या होगा उसका? आपकी बॉडी वो कैप्सूल के साथ, वो ड्रग के साथ, वो टैबलेट के साथ क्या करेगी? पहले तो क्या करेंगी? पहले तो उसको एब्सॉर्ब कर लेगी. So your body will absorb that drug. Second, your body will distribute that drug in a various body compartment. Third, your body will metabolize that drug into inactive metabolite. And fourth, your body will try to remove that drug from your body. And that's why this pharmacokinetics, that is known as a what body does with the drug. यहाँ पे आपको याद रखना है कि pharmacokinetics क्या होता है? Absorption, study of absorption, distribution, metabolism, and elimination of drug, and its relationship with the pharmacological response. And now it is also known as a what body does with the drug. What body does to the drug. What body does to the drug. Why it is known as a what body does to the drug? Because body drug के साथ में कुछ कर रही है. क्या कर रही है body drug के साथ में? Body आपको drug absorb कर रही है, आपका ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ड्रग को मेटाबोलाइज कर रही है, ड्रग को एलिमिनेट कर रही है. सो व्हाट बॉडी डज विद ड्रग इज अ फार्माकोकाइनेटिक्स. द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल बी कवर्ड. नाउ ऑलरेडी देयर वाज अ क्वेश्चन lot of times on this. Okay, kinetics means what? Pharmacokinetics means absorption, distribution, metabolism, elimination. You have to clear that. Okay, what body does with the drug. Now there is another term known as a drug deposition. There is another term known as a drug deposition. So what do you mean by drug deposition? Drug deposition किसे कहते हैं? So out of these four processes, absorption, distribution, metabolism, elimination, so just remove the absorption. Absorption को remove कर दो, absorption को छोड़ दो. बाकी जो process बचता है उसको क्या बोलेंगे? Drug deposition. Okay, there was a question 2 times. What is drug deposition? Distribution, metabolism, and elimination. Distribution, metabolism, and excretion. So drug distribution, drug metabolism, and drug excretion is known as a drug deposition. You have to remember this. Kinetics means ADME and deposition means DME. Okay, DME only. Distribution, metabolism, elimination is the drug deposition process. Absorption, distribution, metabolism, elimination is the pharmacokinetics. Okay, so here your third question will be covered. Okay? Now, what do you mean by pharmacodynamics? Next question आता है आपका pharmacodynamics. So pharmacodynamics means what? So important definitions from general pharmacology, they are very very important because lot of times they used to ask question on this. Okay, pharmacodynamics. What do you mean by pharmacodynamics? So it is a quantitative study of biological response and therapeutic effect of drug. Quantitative study, कितने quantity में कितना response दिखा रहा है, उसको बोलेंगे quantitative study. ठीक है, 1 मिलीग्राम में कितना रिस्पॉन्स दिखाएगा, 2 मिलीग्राम में कितना रिस्पॉन्स दिखाएगा. सो क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग. आपके बॉडी के ऊपर वो ड्रग क्या कर रहा है. ठीक है, पहले केस में क्या था, आपकी बॉडी ड्रग के साथ में कुछ ना कुछ कर रही थी. जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या कर रही थी, बॉडी ड्रग को एब्सॉर्ब कर रही थी, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, ड्रग को मेटाबोलाइज कर रही थी, ड्रग को एलिमिनेट कर रही थी. दैट इज अ काइनेटिक्स. नाउ डायनामिक्स मतलब क्या है कि व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी. यहाँ पे ड्रग बॉडी के साथ में कुछ ना कुछ कर रहा है. क्या कर रहा है? ड्रग अल्टर कर रहा है. क्या अल्टर कर रहा है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन. तो इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग. दैट इज नथिंग बट द व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी. तो पहले केस में क्या था, फार्माकोकाइनेटिक्स में बॉडी कुछ ना कुछ कर रही थी. क्या कर रही थी? एब्सॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेट कर रही थी ड्रग को. इन द सेकंड केस फार्माकोडायनामिक्स मतलब क्या, व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी. व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी. ये सबके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. वट एवर इज रिटन इन द बोर्ड. आइडियली आपको थोड़ा सा, आप अगर नोट्स निकाल सकते हो तो नोट्स निकालना चाहिए आइडियली. अगर नहीं निकालना है तो छोड़ो, मुझे क्या करना है, मेरा काम है पढ़ाना. What drug does with the body is nothing but the pharmacodynamics. Okay, pharmacodynamics. Now, kinetics means what body does with the drug. Okay. What body does with the drug. That is the kinetics. So here next question will be. So pharmacodynamics in simple words means mechanism of drug action, adverse effect and all that. So what drug does with the body is a dynamics. What body does with the drug is a kinetics, right? So अगर आपको ये समझ रहा है,
सो प्लीज द वीडियो का लिंक आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है कि उनको भी बेनिफिट मिल जाएंगे। फ्री में बट रहा है ना, तो बट रहा है तो बटने दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ है ना कुछ नहीं, फ्री में चल रहा है, ठीक है। नाउ अनदर, व्हाट डू यू मीन बाय टॉक्सिकोलॉजी? Normally, what do you now? These definitions they have already asked in the pharmacy exam. Toxicology क्या है? What is toxicology? Toxicology is related with the poisonous effect of drug and other chemicals on the body. Poisonous effect अगर है तो उसको बोलेंगे toxicology. So it is the study of poisonous effect of the drug or chemicals on the human body. So toxic effect. So every drug has a beneficial effect and some non-essential effect. So we call it as an adverse effect or side effect in the simple terms. So toxicology means what? So if a poisonous effect of drug is there, okay, if a fatal effect of drug is there, अगर आपने इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका शुगर लेवल बहुत ही बॉडी का कम हो जाएगा, योर ब्रेन विल सफर फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिक शॉक, ही विल डाई, आपका क्लीन बोल्ड हो जाएगा। अगर आपने इंसुलिन का इंजेक्शन नॉर्मल पर्सन को दे दिया ना और ज्यादा क्वांटिटी में दे दिया ना, तो वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा, उसका विकेट गिर जाएगा, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड विद द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग on and other chemicals on the body, right? Now we also have our online GPAT Niper course, आपको मालूम होगा ये। so इसके बारे में लाइव लेक्चर होता है वेडनेसडे सैटरडे संडे, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज लेक्चर होता है, स्टडी मटेरियल भी होता है इसमें, ऑनलाइन टेस्टिंग भी होता है। वैलिडिटी इसका 2 साल 3 साल तक चलता है। 8,000 रुपये इसका फीस है, and I will not explain a lot of things because here is not a time to explain them. Now next term is a chemotherapy. What do you mean by chemotherapy? Chemotherapy means what? What do you mean by chemotherapy? So chemotherapy is nothing but it is the concern with the effect of drug upon microorganism. So effect of drug on a microorganism. Microorganism कौन होता है? Microorganism, bacteria, fungus, okay, virus. So effect of drug on a microorganism, or study of drug on a microorganism, that is known as a chemotherapy and parasite. So which are living and multiplying in the human body. तो आपको अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो क्या होता है कि कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आता है और वो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है, वहाँ पे वो अपना घर बसा लेता है। सो केमोथेरेपी इज नथिंग बट द टर्म रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट which are living and multiplying in the living organism. Now this chemotherapy term is also used for the anti-cancer drugs. Sometimes this chemotherapy term is also used for the treatment of cancer. Chemotherapy term क्या है? Antibacterial के लिए। So originally chemotherapy term is for antibacterial drugs, but nowadays it is also used for the anti-cancer agents. Why? Because okay, chemotherapy is term also roughly used for the anti-cancer drugs. Because but there is a difference. Chemotherapy means what? Killing of microorganisms. So microorganisms they are foreign to our body. वो बाहर से आता है ना, बैक्टीरिया वायरस वगैरह। बट कैंसर क्या है? कैंसर इज नथिंग बट योर ओन सेल। सो बट इट इज यूज्ड रूटीनली। नाउ इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, देखो। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका ऑर्फन ड्रग। जीपैट 2023 जो रिसेंटली जो जीपैट एग्जाम हुआ है, जीपैट 2023, इसके ऊपर इसमें से क्वेश्चन था। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग? सो ड्रग्स which are used for the treatment of rare diseases. Rare disease में जो ड्रग यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे बॉस? ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग मीन्स व्हाट? ड्रग which are used to treat the rare disease. These are the drugs which are used to treat the rare disease. Rare disease कौन होता है? Rare disease कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल रेयर डिसीज क्या होता है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया किस में होता है? सपोज इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़, so out of 130 crore only 1% people will have thalassemia. Out of 130 crore only 0.5% people will have certain kind of rare cancer. Okay, so only few people will have muscular dystrophy, only few people will have different will have cerebral ataxia. So rare disease means what? Those disease which are there in a very less amount of population. 125 करोड़ में से अगर किसी 100-200 को अगर कोई डिसीज है तो उसको क्या बोलेंगे? रेयर डिसीज। व्हाट इज ऑर्फन ड्रग? ड्रग यूज्ड टू ट्रीट द रेयर डिसीज। इसके एग्जांपल्स देखो। व्हाट इज द एग्जांपल? पेंटामिडिन। सो पेंटामिडिन इज द एग्जांपल। ओके,
Pentamidine is the example. Then the list of this orphan drug includes lot of drug. So यहाँ पे आपको याद रखना है. What is the example? Pentamidine. Then sodium nitrite. Sodium nitrite. Then omeprazole. Then liposomal amphotericin B. Then miltefosine, rifabutin, succimer, somatotropin, digoxin immunofab or digoxin antibody, then lithothyronine, and many more drugs are there. So orphan drugs मतलब क्या? These are the drugs used to treat the rare diseases. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. GPAT 2023 में भी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. एंड फार्मासिस्ट एग्जाम में जैसे एक एग्जाम था, कौन सा एग्जाम था? मेडिकल डिपार्टमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2015. मेडिकल डिपार्टमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2015 जो फार्मासिस्ट ग्रेड बी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्फन ड्रग. अब उसमें लिस्ट में क्या था? यही था. सोडियम नाइट्राइल था, फोमिपिजोल था, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी था, एंड उसमें और एक ड्रग था, उसमें था कीटोकोनाजोल. तो आंसर वाज कीटोकोनाजोल, बट उन्होंने आंसर एम्फोटेरिसिन बी दिया था, तो वो रॉन्ग है. ये वीडियो पूरा के पूरा वीडियो जो है, लास्ट वाला जो वीडियो है वो वही है. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही था. ठीक है. जो मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल स्टाफ सिलेक्शन, ओके, उसमें जो क्लास बी का फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन आया था. तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्फन ड्रग. तो उसका आंसर था एम्फोटेरिसिन बी. उसमें उन्होंने आंसर एम्फोटेरिसिन बी दिया था, बट वो गलत था. उसका आंसर था कीटोकोनाजोल. Now again, so what do you mean by orphan drug? Drug used to treat the rare diseases. Now who define the orphan drug? कौन define करता है orphan drug को? आप, मैं, नहीं, दोनों भी नहीं. So orphan drugs, they are defined according with the Orphan Drug Act 1983. Orphan Drug Act 1983. Orphan Drug Act 1983. First it was passed in the USA, United States of America. Orphan Drug Act, ठीक है, 1983 कब पास होता है? 1983. फर्स्ट टाइम इट वाज passed in the USA. You have to remember. And in that act, as per that act, Orphan Drug 1983. So drug used to treat the rare diseases, they are known as a orphan drug, right? They are known as a orphan drug. List lot of drugs are there in our orphan drug list, but few are, I have listed few drugs over here. Okay, so sodium nitrite, you have to remember. Omeprazole. Omeprazole is also a drug. It is an antidote for propylene glycol poisoning. It is antidote for ethanol poisoning. Then liposomal amphotericin B. अभी जो एक कोरोना वायरस में एक सुपर इन्फेक्शन आया, कौन सा? म्यूकोरमाइकोसिस. There was one super infection known as mucormycosis after the corona infection because of the use of steroidal drugs. So in that mucormycosis, drug of choice was the only amphotericin B. Okay. Then miltefosine, rifabutin, succimer, somatotropin, digoxin immunofab antibody. Digoxin immunofab antibody क्या है? It is an antidote for digoxin toxicity, lithothyronine, and many more drugs. They are in an orphan. Okay. So you can see over here top selling orphan drug. Okay. So first is nothing but the rituximab. Rituximab is antibody, monoclonal antibody used in the cancer treatment, oncology. Okay, ranibizumab, it is also antibody in ophthalmology. Then somatotropin, it is used in the EPR, okay, and metabolism. Then lanidomide, okay, then imitinab mesylate, it is used in the cancer. Then filgrastim किसमें यूज होता है? Filgrastim is used in the hematology. इसके ऊपर भी GPAT 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, filgrastim. So actually this, when we will see drug acting on a blood, at that time I will explain about the filgrastim. Okay. Then another drug is the gal. Okay, all these drugs are nothing but the orphan drug. Okay, so we will take next definition. So next definition is the essential drug. Next definition is the essential drug. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. What do you mean by essential drug? What do you mean by essential drug list? Okay. So essential drugs means what? Suppose इंडिया का पॉपुलेशन है आपका 130 करोड़. ठीक है. 130 करोड़ में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए कौन से ड्रग लगेंगे? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को क्या हो सकता है?
बहुत सारे पॉपुलेशन कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, पेन किलर लगेंगे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को फीवर हो सकता है, पैरासिटामोल लगेगा। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को क्या लगेगा, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज के ड्रग लगेंगे, बहुत सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो हाइपरटेंसिव ड्रग लगेंगे। सो these are the drugs, these are the list of drug. Now essential drug means list of drug which can satisfy the healthcare need of majority of population. इंडिया में मेजोरिटी लोगों के लिए कौन सा ड्रग है, मेजोरिटी इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो कौन से डिसीज से सफरिंग करते हैं और उसके लिए कौन सा ड्रग लगता है, उसके लिए essential drug list होता है। So every country has their own list of essential medicine. Okay, so these are the drug listed by WHO, and these are the drug listed by every country. It is a list of national list of essential medicine. These are the drugs that can satisfy the healthcare need of majority of population. These are the drugs which can satisfy healthcare need of majority of population. Now in India, latest essential drug list was no latest not latest essential drug list was last year. There was a last year latest essential drug list. Okay, which has a, you can see, you can go in the Google and check last year essential drug list was published by government of India. So how many drugs are there? But in 2007, in the 17th essential drug list was published in the 2011. It has a 348 drugs. Next definition देख लेते हैं. Next definition important है. What is mean by P drug? What is mean by P drug or personal drugs? So these are the drugs chosen by a doctor or physician which for prescribing regularly for a patient, and the patient will become familiar with the drug. Okay, so if you are having infections, if you are having some problem routinely, you used to visit the doctor. Doctor used to prescribe you certain medicines, and because of the routine prescription of that medicine, you get familiar with the drug, and that is known as a personal drug. But basically ऐसा कुछ concept होता नहीं है, personal drug concept नहीं होता. It is just a myth. It is just a myth. Personal drug कोई होता नहीं. So you have to remember the orphan drugs, essential drug list. Question बहुत बार इसके ऊपर आ चुके हैं. Last year भी question आया था, GPAT 2023 में भी question आया है. Next term is nothing but the, what do you mean by bioavailability? Very important term, bioavailability. Very important term, bioavailability. So what do you mean by bioavailability? So अगर आपको समझ रहा है तो प्लीज कमेंट में यस टाइप कीजिए. If you are getting, okay, if you are understanding the concepts, please write yes in the comment box. Okay, and if you want, please share this link with the other friends so that they will get benefited. आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है. आपको नहीं बोला होगा किसी ने, ये अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज है. आपको मालूम भी होगा फिर भी आपको देखना है क्योंकि ये जस्ट स्टार्टिंग है. अभी तो बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारा क्वेश्चंस आ चुका है इसमें से, वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. So please be with me until end. So what do you mean by bioavailability? So what do you mean by bioavailability? It is nothing but the amount of drug that reaches to a systemic circulation after the absorption. Amount or percentage of drug that is absorbed from the given dosage form and that reaches to a systemic circulation. That reaches to a systemic circulation. देखो आप जो ड्रग लेते हो इन द फॉर्म ऑफ आइदर टैबलेट और कैप्सूल, so or syrup suspension, whatever you are taking, that will go in the GIT, and from that it will be absorbed and it will go into systemic circulation. That is known as a bioavailability. Simple terms है bioavailability. आपको explain करता हूँ. The term bioavailability. Bio means what? Bio means living system. And what do you mean by availability? So, availability means presence. So availability of biologically active drug. Biologically active drug कब होगा? जब ड्रग ब्लड में जाएगा तभी एक्टिव होगा ना. So bioavailability means amount of drug which is absorbed from the site of administration into the systemic circulation. That is known as a bioavailability. देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था. So bioavailability is 100% when drug is given by intravenous route. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Bioavailability is 100% when drug is given by
intravenous route. When you use injection, intravenous injection, so at that time bioavailability is 100%. अगर आपने intravenous injection लिया है तो उसका bioavailability क्या होगा 100%. Now bioavailability is denoted by the term EF. Bioavailability is denoted by the term EF. Fraction of drug that reaches to a systemic circulation. That's why EF. Okay. ये EF क्यों बोलते हैं इसको? Fraction of drug that reaches to systemic circulation. That's why EF. Now, bioavailability is 100% when it is given by intravenous route. It is also known as EF is equal to 1. 100% bioavailability means EF is equal to 1. आपको ये याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Okay? Availability of biologically active drug. That is nothing but the. Are you getting my voice? If yes, please write yes in the comment box. अब बच्चों बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो उसको. So what do you mean by bioavailability? So amount of drug in the systemic circulation. So it is given by this formula: bioavailability is equal to EF is equal to area under curve after oral administration into dose of intravenous administration. Area under curve after intravenous administration into area into dose of oral. Okay? So देखो यहाँ पे फॉर्मूला है bioavailability is equal to area under curve after oral administration into dose of intravenous divided by area under curve after intravenous administration into dose of oral. That is the formula. Okay, you have to remember this. Okay. Area under curve after oral administration. PO means per oral. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. What do you mean by PO? PO means per oral. Okay, याद रखो. Area under curve after oral administration into dose of intravenous. Okay. Area under curve after oral administration dose of IV divided by area under curve after IV administration into dose of oral. Okay. So that will give you bioavailability. It is 100% when drug is given by intravenous route. Okay. Now we'll see the next term. What do you mean by bioequivalence? What do you mean by bioequivalence? Very important term है bioequivalence. What do you mean by bioequivalence? So when two doses form, when the rate and extent of bioavailability, यहाँ पे लिखा है rate and extent. When the rate and extent of bioavailability of active ingredient from the two formulation, when they are same and they are tested by standard method, they are known as a bioequivalent. Bioequivalent मतलब क्या? आपके पास में दो फॉर्मुलेशन है. क्या है आपके पास में? दो फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन ए एंड फॉर्मुलेशन बी. मैं एक एग्जांपल भी लेता हूँ आपको. जैसे आपके पास में दो टैबलेट्स है. एक टैबलेट है इप्का कंपनी का. इप्का फार्मास्यूटिकल का एक टैबलेट है. उसका नाम है पैरासिमोल. उसमें पैरासिटामोल है 500 मिली. आपके पास में क्या है? दूसरा एक टैबलेट है नोन एज अ कैलपोल. कैलपोल में भी क्या है? 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल है. ठीक है. तो कैलपोल एंड पैरासिमोल ये दोनों टैबलेट है जिसमें 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल है, पर दोनों अलग अलग कंपनी के. ठीक है. When the rate and extent of bioavailability of the active ingredient of the two formulation are same, tested by standard method, they are known as a bioequivalent. अगर पैरासिमोल और कैलपोल दोनों का bioavailability same है, the rate and extent of bioavailability, if they are same, that is known as a bioequivalence. That is known as a bioequivalence. Clear? We will see the next term. Next term होता है आपका pharmaceutically equivalent. ये क्वेश्चन GPAT 2019 में आ चुका है बॉस. What do you mean by pharmaceutically equivalent? What do you mean by pharmaceutically equivalent? So when two formulation contain same active ingredient and they are identical in the strength, concentration and dosage. When two formulation consist of ingredient which are same ingredient and they are identical in the strength, dose भी same होगा उसका, concentration and dosage. अगर दो कंपनी के दो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स है आपके पास में, तो दोनों प्रोडक्ट क्या है? सेम डोसेज फॉर्म है. मतलब दोनों में क्या है? टैबलेट है. फिर दोनों में क्या है? सस्पेंशन है. जैसे मान लीजिए कैलपोल सस्पेंशन, पैरासिटामोल सस्पेंशन. पैरासिटामोल सस्पेंशन में पैरासिटामोल है 125 मिलीग्राम पर 5 ml और उसमें जो कैलपोल सस्पेंशन है उसमें भी 125 मिलीग्राम पर 5 ml. मतलब दे आर आइडेंटिकल इन द स्टेट
and concentration and dosage form दोनों भी क्या है suspension है. So that is known as the pharmaceutical equivalent. And this was question in GPAT 2019. GPAT 2019 में question पूछा है what do you mean by pharmaceutical equivalent? इसको बोलते हैं बस pharmaceutical equivalent. अगर दो dosage form दो कंपनी के क्या है आपके पास दो कंपनी का सस्पेंशन है क्या है सस्पेंशन या फिर सिरप ले लो आप दो कंपनी का सिरप है आपके पास एक कंपनी है एक कंपनी है आपका जीएस की ठीक है इपका या फिर एक कंपनी इपका एक कंपनी जीएस की एक इपका कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं पैरासिटामोल सस्पेंशन और पैरासिटामोल सिरप जो भी है तो उसमें अगर 125 मिलीग्राम पैरासिटामोल पर 5 ml है और उसमें वो सस्पेंशन है और दूसरा भी कंपनी का सस्पेंशन ही है उतना ही ड्रग है so if two formulation consist of the same active ingredient which are identical in the strength concentration and dosage they are known as a pharmaceutically equivalent. This was question in GPAT 2019. ठीक है bioequivalence क्या है if bioavailability of two formulation the rate and extent of bioavailability in the two formulation if they are same tested by standard method they are known as a bioequivalent. Pharmaceutical equivalent if two dosage form will have the same drug their strength will be same concentration will be same and same dosage form that is known as the pharmaceutical equivalent. और एक टर्म आता है यहाँ पे देखो इसमें और दो टर्म आता है एक आता है what is meant by pharmacological equivalent. What is meant by pharmacological equivalent? So if two formulations they exert a same pharmacological response. Pharmacological equivalent क्या होता है pharmacological equivalent देखो यहाँ पे लिखा नहीं है और एक टर्म है pharmacological equivalent. So what is meant by pharmacological equivalent? So if two dosage forms or two drugs, if two drug dosage forms छोड़ो, two drugs if they exert the same pharmacological response, if two drugs exert the same pharmacological response, they are known as a pharmacological equivalent. Okay? They are known as a pharmacological equivalent. Okay, so they might be different category drug, but they exert the same pharmacological response. ठीक है जैसे होता है ना कि पैरासिटामोल क्या है एंटीपायरेटिक है बट अगर आपको आइबुप्रोफेन दे दिया तो वो भी एंटीपायरेटिक एज ए इफेक्ट करेगा सो दे कैन बी कॉल्ड एज अ फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट सो एवरी फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट नीड नॉट टू बी एवरी फार्माकोलॉजिकल इक्विवेलेंट नीड नॉट टू बी फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट तो जो फार्माकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट नहीं हो सकता ऐसा हर बार और एक टर्म आता है केमिकल इक्विवेलेंट और एक टर्म होता है आपका केमिकल इक्विवेलेंट chemically equivalent. So what do you mean by chemically equivalent? Chemically equivalent. If two drugs they are having same molecular formula. If two drugs are having same molecular formula and same salt. If two drugs having same molecular formula, same salt and they are prepared by same chemical reaction. So they are known as a chemical equivalent. So here are four terms. यहाँ पे चार टर्म होता है आपका मैंने चार बोला है यहाँ पे लिस्टेड टू है So bioequivalence means two formulation will have same bioavailability. Pharmaceutical equivalent means two formulation will have same drug, same concentration and same dosage. Then pharmacological equivalent means two drugs will have same pharmacological equivalent. Chemical equivalent means when two drugs will have same chemical formula, same chemical structure, same chemical formula, same chemical nature, same chemical structure and prepared by similar method. They are known as chemical equivalent. नेक्स्ट टर्म आता है आपका व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड ड्रग इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड ड्रग ये आपको किसी ने बोला नहीं होगा क्योंकि आपके कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया होगा आपको और ये क्लासेस वाले बंगार लोगों ने तो पढ़ाया नहीं ठीक व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड ड्रग हार्ड किसको बोलते हैं तो आपको हार्ड टर्म एक ही इसमें होता है बहुत हार्ड जो रैपर्स होते हैं ना वो बोलते हैं बहुत हार्ड तो आपको वो हार्ड याद है ये हार्ड याद नहीं रहता ठीक है रैपर्स जो बोलते हैं आपको बहुत हार्ड तो वो टर्म याद है आपको ये टर्म याद नहीं है व्हाई बिकॉज हार्ड ड्रग्स मींस व्हाट हार्ड ड्रग मींस दे आर रेजिस्टेंट टू द मेटाबोलाइजेशन सो दीज आर द ड्रग व्हिच आर रेजिस्टेंट टू मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी अगर आपके कोई ड्रग है जो इजीली मेटाबोलाइज नहीं होता सो दीज आर द ड्रग व्हिच आर रेजिस्टेंट टू मेटाबोलाइज these are the drugs which are resistant to the metabolites okay so they are resistant to the metabolism they are not easily get metabolized in the body and that's why they are known as the hard drug uske examples क्या है what are the examples inaprelate so inaprelate is nothing but the
एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इनाप्रिल ड्रग. इनाप्रिल जो ड्रग होता है, इनाप्रिल एस इनहिबिटर, उसका ये एक्टिव ड्रग होता है इनाप्रिल. You can say inapril is a product and active metabolite is inapril. So inaprilate is a hard drug. It is not easy to make. Then lisinopril is a hard drug. Then cromolyn is a hard drug. Cromolyn is a hard drug. तो आपको एग्जांपल से याद रखना है. यहाँ पे एग्जांपल्स बुक में भी दिए नहीं बहुत सारे. ये मैंने 2-4 बुक्स का कलेक्ट करके यहाँ पे लिस्ट किया है. तो रिमेंबर इनाप्रिलेट, lisinopril and cromolyn. So these are the drugs which are not easily metabolized in the body. ये बॉडी में जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होगा, इसलिए उनको बोलते हैं हार्ड ड्रग्स. अभी इसके अपोजिट एक टर्म है सॉफ्ट ड्रग. व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट ड्रग? सो सॉफ्ट ड्रग्स दे आर द ड्रग व्हिच आर इजीली गेट मेटाबोलाइज्ड. सॉफ्ट ड्रग क्या होते हैं? दे इजीली गेट मेटाबोलाइज्ड. सॉफ्ट ड्रग मींस दे इजीली गेट मेटाबोलाइज्ड. फॉर एग्जांपल देखो इसका है सिटाइल पिरिडियम एंड सॉफ्ट क्लोरामाइन. सिटाइल पिरिडियम and soft chloramine, these are known as a soft drug because they are easily metabolized in the body. अगर कोई ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज होता है बॉडी में तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट ड्रग. अगर कोई ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है बॉडी में, वो रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हार्ड ड्रग. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज नथिंग बट द बायोअवेलेबिलिटी. सो व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? It is nothing but the availability of biologically active drug, or you can say amount of drug or fraction of drug or quantity of drug that reaches to a systemic circulation, that is known as a bioavailability. Okay, the fraction absorbed into systemic circulation is the drug's bioavailability. Okay. Now whatever you are eating, तो bioavailability का formula क्या होता है? ये bioavailability is equal to area under curve after oral administration divided by area under curve after intravenous administration. इसमें और एक टर्म भी डाल सकते हैं into 100, या फिर इसमें dose of IV divided by dose of oral. ये भी कर सकते हैं. Now what is bioavailability? I have told you. Now you are taking a drug along with the meal. आप खाने के साथ में टैबलेट लेते हो, खाना खाने के बाद में टैबलेट मुंह से ही लेते हो ना, तो क्या होता है? So tablet will be disintegrated in the stomach. It will be dissolved in the GIT fluids. And after dissolution, it will be absorbed into the GIT lumen. यहाँ से absorption होगा. GIT एरिया जो है, जो आपका किचन एरिया है, जहाँ पे आपका किचन है, मतलब जो स्टमक है, इंटेस्टाइन. So whatever GIT area is there, so GIT area is supplied with the blood vessels. So whatever nutrition, vitamins along with the drug which is being absorbed through GIT lumen, okay, that is transported to a blood, not directly to the blood. So it is transported to a blood vessel. And which blood vessel is there around the GIT? That is known as the portal vein. Okay, portal vein. So drugs along with your food that is absorbed from GIT lumen, which is transported by portal vein to a liver. liver को ये portal vein आपका GIT में जितना भी GIT एरिया में जितना भी ब्लड है, वो सब GIT एरिया में से जो भी एब्सॉर्प्शन हुआ है न्यूट्रिशन का, ड्रग्स का, जितने भी एब्सॉर्प्शन हुआ वो कहाँ पे जाएगा? पोर्टल वेन में जाएगा. पोर्टल वेन क्या करता है? पोर्टल वेन विल take that blood to a liver because liver is the metabolic factory of body. आपको मालूम होना चाहिए आपने जो भी खाया है, जो भी एब्सॉर्प्शन हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ions, etc., etc., minerals along with the drug that will be carried to a liver. Okay, now यहाँ पे क्या होता है? liver में as most of the blood from GIT area is carried to a liver by portal vein. So some amount of drug, not all, some amount of drug it get metabolized in the liver. Some amount of drug will be metabolized by the liver. Okay, and that is known as a some amount of drug will be metabolized by liver before reaching to a systemic circulation. क्या होता है? आपने जो ड्रग लिए है GIT एरिया में से पोर्टल वेन क्या करेगा? उसका जो एब्सॉर्प्शन हुआ है वो लिवर को लेके आएगा. लिवर को लेके आने के बाद लिवर क्या करता है? थोड़ा बहुत उसको मेटाबोलाइज करता है. ठीक है, जो पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के पहले ही उसको थोड़ा बहुत अमाउंट मेटाबोलाइज हो जाता है और उसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट. सो metabolism of drug before reaching to a systemic circulation by the liver is known as the first pass effect. First pass effect किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं. First pass effect.
First pass effect. So first pass effect is nothing but the metabolism of drug before reaching to a systemic circulation. That is known as the first pass effect, or it is also known as a pre-systemic metabolism. क्या बोलते हैं pre-systemic metabolism. So first pass effect will decrease the bioavailability of your drug. ये important है, concept है, question आते हैं इसको. Okay? Now you can see अगर आपने if you plot a plasma drug concentration versus time, क्या करना है, ड्रग देना है, उसके बाद में एक हाफ एन आवर के बाद में इंटरवल के बाद में हाफ आवर के बाद में इसका ब्लड सैंपल ले लो, ड्रग कितना आया है चेक करो, फिर से एक हाफ आवर के बाद में सैंपल ले लो, उसके ब्लड में कितना ड्रग है चेक करो. सो इफ यू प्लॉट एट प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, सो वी गेट अ कर्व नोन एज अ, ओके. ये इंट्रावेनस देने के बाद में, इफ यू इंट्रावेनस ड्रग के बाद देने के बाद में बायो अवेलेबिलिटी 100% होता है, एंड as compared to that oral bioavailability is calculated. That is known as the relative bioavailability. So यहाँ पे जो first pass effect बोला है मैंने, so those drug which belongs to class 1, those drug which belongs to class 1 as per the biopharmaceutical classification of drug, those drug which belongs to class 1 as per the biopharmaceutical classification of drug, so they undergo extensively on the first pass metabolism. For example, propranolol जो होता है, propranolol is a class 1 drug as per the biopharmaceutical classification. ठीक है, ये propranolol class 1 drug होता है, and it undergo extensively undergo first pass effect. First pass effect, इसका क्या होगा, first pass effect होगा, मतलब ये कि इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा कब, before reaching to a systemic circulation, a part of drug is metabolized. So that is known as a first pass effect. First pass effect. Okay. So class 1 drug as per the biopharmaceutical classification, they extensively undergo first pass metabolism or pre-systemic metabolism. First pass effect जो है उसको ही बोलते हैं pre-systemic metabolism. Is that clear? Now we'll see the next. Okay. Suppose, okay, I would like to explain you some terms over here. Okay. If you plot a plasma drug concentration versus time, अगर आपने पेशेंट को कोई ड्रग दे दिया एंड आफ्टर हाफ एन आवर, एट द टाइम इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर, हर एक आधे घंटे के बाद में आपने क्या किया, इंजेक्शन में से उसका ब्लड निकाला और उसको टेस्ट किया, तो उसमें अमाउंट मिला. जैसे इनिशियली ड्रग ले लिया, तो इनिशियली इमीडिएटली चेक किया तो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन आएगा नहीं ब्लड में. अगर हाफ एन आवर के बाद में चेक किया तो कुछ अमाउंट आएगा, अगर वन आवर के बाद में चेक किया तो और ज्यादा आएगा, 2 आवर्स में और ज्यादा आएगा, 3 आवर्स में कम हो जाएगा. So if you plot a plasma drug concentration on a y-axis, if you plot a plasma drug concentration on y-axis and time on a x-axis, so you will get a particular curve known as a plasma drug concentration versus time curve. Okay? And this curve will explain you a lot of things. Okay? So initially you are taking the drug, at that time there is no concentration of drug in the blood, but after some time there will be concentration of drug in the blood. So here a lot of terms are there. So first is nothing but okay. So after initial administration, slowly there will be increase in the drug concentration in the blood. Drug concentration will be increased. It will go up to a peak level. ये peak level पे जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, drug concentration body में कम हो जाएगा. ठीक है, this is known as a plasma drug concentration curve. Now I will explain you the terms in this curve. इसमें कौन से टर्म्स होते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है. नाउ फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट द मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन. फर्स्ट टर्म क्या है आपका, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, MEC. फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट द मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन? इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड. इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन. ये एक इतने अमाउंट का ड्रग बॉडी में होना चाहिए तभी जाके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाएगा. दैट इज नोन एज द मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग. मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, नोन एज द मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट टर्म है आपका, देखो नेक्स्ट टर्म है मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट टर्म है मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, MSC. ओके, सो इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड
it is the concentration of drug in the blood above which there is a toxic effect. इसके ऊपर concentration गया blood में drug का तो क्या होगा toxicity हो जाएगा. So that is known as the maximum safe concentration or maximum safe concentration, and this is the minimum effective concentration. तो देखो term याद करना है आपको important है. So minimum effective concentration is nothing but it is the minimum amount of drug that is required in the body to show the pharmacological effect. Maximum safe concentration is nothing but the concentration of drug above which there is a toxic effect. ठीक है. अभी देखो क्वेश्चन GPAT 2021 GPAT 2021 में क्वेश्चन आ चुका है. कौन सा क्वेश्चन आया था बॉस? ये वो क्वेश्चन आया था the concentration range between these two. The concentration range between minimum effective concentration and maximum safe concentration. The concentration range between these two. ये जो concentration range है इसको बोलते हैं therapeutic window और therapeutic range. Okay? So the concentration range between minimum effective concentration and maximum safe concentration is known as a therapeutic range or therapeutic window. And this was question in GPAT 2020. 21 में ये क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. Now below the minimum effective concentration, below the minimum effective concentration, अगर आपका ड्रग मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से कम है आपके बॉडी में तो उसको बोलने का सब थेरेपेटिक लेवल. बिलो द मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज बिलो द मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन देन इट इज नोन एज अ सब थेरेपेटिक लेवल, एंड सब थेरेपेटिक लेवल मींस ड्रग इज इनइफेक्टिव. सब थेरेपेटिक लेवल मतलब क्या? ड्रग इफेक्टिव नहीं है. ड्रग इफेक्टिव कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तक आएगा मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, और इसके ऊपर जब तक कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तब तक ड्रग एक्टिव है. मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेशन गया ड्रग का बॉडी में तो क्या होगा? टॉक्सिक इफेक्ट. टॉक्सिक इफेक्ट टॉक्सिक हो जाएगा. So the concentration range between minimum effective concentration and maximum safe dose or maximum safe concentration is nothing but the therapeutic index, or sorry, therapeutic window or therapeutic range. Therapeutic range, therapeutic window, the concentration range between these two. Concentration range between MEC and MSC is nothing but the therapeutic range or therapeutic window. So depending on that, drugs may be either narrow therapeutic range or wide therapeutic range. कुछ ड्रग होते हैं जो वाइड थेरेपेटिक विंडो होते हैं, किसी ड्रग का नैरो थेरेपेटिक विंडो होता है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टर्म आई विल एक्सप्लेन. सो व्हाट डू यू मीन बाय onset of drug action? Onset of drug action, it is nothing but the time span between the administration of drug to get a minimum effective concentration in the blood. ड्रग का मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में आने के लिए कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं onset of drug action. Okay? Onset of drug action means the time spent required to reach a minimum effective concentration of drug in the blood. That is a onset of action, and the time required to get onset of action is known as a onset time. Time at which there is a onset of action known as a onset time. Now second term. So after the initial administration of drug, it will get increase the concentration in the blood. Drug concentration body में बढ़ जाएगा, and it will go at a peak level. एक सबसे okay. So maximum concentration of drug in the body. Maximum concentration of drug in the body is known as a Cmax. क्या बोलते हैं उसको? Cmax. Cmax means maximum concentration of drug in the body. At the Cmax के ऊपर क्या होता है? The rate of absorption is equal to rate of elimination. Rate of absorption is equal to rate of elimination at the Cmax. Okay? And after that, there is a decrease in the concentration of drug in the body. क्यों होता है? Because जहाँ पे absorption is equal to elimination, यहाँ पे peak level, इसको बोलते हैं peak plasma level और Cmax. Cmax is the maximum concentration of drug in the body, right? After that, drug का concentration body में से कम हो जाएगा और ये eliminate हो जाएगा. Elimination phase. Okay? Elimination phase. You have to remember, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. At the Cmax, at the maximum or at the peak plasma level, rate of absorption is equal to rate of elimination. यहाँ पे ये याद रखो. Now, next term क्या है? Now the concentration range, time for which drug remains above the MSC.
the time span for which drug will remain above the minimum effective concentration, that is known as the duration of action. कितना टाइम तक आपका जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है, कितना टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए ये टाइम दिया है, देखिए ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, इस ये दौरान के क्या है, इसके ऊपर जितना ड्रग है कॉन्सेंट्रेशन, so time duration for which drug concentration remains in the body above the MAC, that is known as the duration of action. And this vertical line from the Cmax to the X will indicate you the intensity of action, kitna intense action. Tmax means what? The time required to get a Cmax. Time required to get a Cmax is the Tmax. Okay. So it is a typical plasma drug concentration versus time curve showing the kinetics and dynamics after single oral dose administration. Hope you have understood it. Now we'll see the next point. Okay. After the oral administration of drug, आपने कोई टैबलेट ले लिया oral administration. Okay. So after the oral administration, drug in a dosage form. So drug in a dosage form. Say for example tablet. Tablet है आपका. Tablet in the stomach GIT. It will be disintegrated. It will be undergo dissolution. It will release the drug. Okay? It will release the drug. And this drug in a solution. This drug in a solution will be absorbed through a systemic circulation. ये intestine is suppose आपका intestine से absorb हो जाएगा drug. ठीक है? So this is known as the absorption. So movement of drug from the absorption side to the systemic circulation known as the absorption order. After the absorption of drug is in the blood. अगर absorption होने के बाद में drug कहाँ जाएगा? Blood में रहेगा. ठीक है? Now blood में drug क्या हो सकता है? So in the blood, drug may remain in the free form. Drug may remain in the free form. It may be either in a free form or it may bound to plasma proteins. Drug may be remain either in a free form in the blood or it may bound to plasma protein. तो blood में drug क्या हो सकता है? एक तो free रहेगा, ठीक है? नहीं तो फिर क्या करेगा? वो किसी के साथ में अपना सेटिंग कर लेगा. किसके साथ में सेटिंग कर लेता है? ड्रग कर लेता है सेटिंग आपके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ. प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में अगर सेटिंग कर लिया ड्रग ने तो उसको बोलेंगे प्रोटीन बाइंडिंग काउंटर. ठीक है? या फिर ड्रग का क्या हो सकता है? ओके, सो प्लाज्मा प्रोटीन. आफ्टर दैट इफ ड्रग इज फ्री इट विल गो एट द साइट ऑफ एक्शन. जहाँ पे उसका मैकेनिज्म है वहाँ पे जाएगा, मतलब साइट ऑफ एक्शन, वेयर इट विल आइदर रिमेन इन द फ्री फॉर्म और आइदर इन द बाउंड. और ड्रग जो है फ्री ड्रग will move to the tissue storage. Either it will remain free in the tissue or it will remain in the bound tissue. Tissue binding order. So if drug binds to tissue or if drug binds to a particular tissue, that is known as a tissue binding of drug. If drug binds to a protein, that is known as a protein binding of drug. So इसके दोनों के ऊपर अपन separate section है वो ले लेंगे. Okay? Now drug in a blood, it may be either okay. It may be either metabolized. It may be either metabolized. इसका मेटाबॉलिज्म होगा, that is known as a biotransformation. Biotransformation मतलब क्या? बस bio मतलब biological systems, transformation मतलब क्या? Alteration of drug in the body. Biotransformation means simply a metabolism. Okay, so drug in the blood may be either in the free form, bound form. It may bound to plasma protein. It may go to site of action. It may go to tissue storage. It may remain in the blood. It may be metabolized. Okay, so it may be metabolized. Now metabolite of drug after metabolism that will be eliminated. Okay. Now there are certain drugs which are removed from the body without metabolism. कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं उनका, वो रिमूव हो जाते हैं. So removal of drug as such or removal of drug after metabolism, right? Now this page is known as a distribution and storage page. This page is known as a distribution and storage page. And after this drug will be eliminated in the form of drug or drug metabolite. Drug may be eliminated in the from the body either in a unchanged form or in the metabolite form, in the urine or bile or feces, sweat and saliva. So this phase is known as the excretion phase.
दिस फेज इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो बॉडी में एब्सॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है एंड एलिमिनेशन होता है। So they are known as ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination. Each and every process is a separate. Absorption के ऊपर एक लेक्चर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक लेक्चर होता है, एक्सक्रीशन के ऊपर एक लेक्चर होता है, ठीक है? तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म के ऊपर एक लेक्चर होता है. So we'll see it. Okay. So whatever content I have listed over here, that is present in this book. ये मेरा book है Magic Bullet for GPAT Niper DI Pharmacist. Okay. Order the Magic Bullet, read twice and qualify 100%. दो बुक से fundamentals of GPAT every year from this single book. Around 50 to 60 MCQs that will be covered from the theory part. इसमें जो theory part दिया है उसमें से 60-70 क्वेश्चन तो आपके GPAT एग्जाम में कवर हो जाएंगे, 100+ क्वेश्चन नाइपर में कवर हो जाएंगे एंड ये जो एमसीक्यू का बुक है उसमें से एटलीस्ट 25 or 30 क्वेश्चंस तो कवर हो जाते हैं जीपीएट एग्जाम। यू कैन ऑर्डर दिस बुक्स आल्सो। Thousands of students they are qualified GPAT and NIPER just by reading these books. Okay. Now after that, different processes of absorption, drug absorption, different absorption process. Different processes of absorption. Drug absorption. What is meant by drug absorption? Movement of drug from the site of administration to the systemic circulation. मूवमेंट क्या होता है? ड्रग कहाँ से कहाँ जाएगा? जहां से आपने ले लिया है, ओरल ले लिया है, तो ड्रग इंटेस्टाइन में से ब्लड में जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? ड्रग एब्सॉर्प्शन. सो मूवमेंट ऑफ ड्रग from the site of administration to the systemic circulation is known as a absorption. Okay, absorption. Now absorption that occurs in the different phases. कि absorption of drug depends on the physicochemical properties of drug. ड्रग का एब्सॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड है? फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, कि वो ड्रग कितना लिपिड सोल्यूबल है, उसका आयोनाइजेशन कितना होता है, ठीक है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है. सो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट on the absorption. The factors affecting on the absorption, that is not a part for GPAT lecture. Factors affecting the absorption, you can read from the books. Factors affecting on the absorption, that is a part for your semester exam. But what are the important factors? I will explain over. So absorption process that occurs in the different phases. So there are different processes of absorption. Passive absorption, passive process or active process. So passive means there is no requirement of energy. देखो एब्सॉर्प्शन प्रोसेस कितना होता है? फर्स्ट एब्सॉर्प्शन प्रोसेस, तो पैसिव डिफ्यूजन. तो एब्सॉर्प्शन कैसे होगा? सपोज आपका ड्रग क्या है? ड्रग इज इन जीआईटी में ड्रग है, आपके स्टमक में ड्रग है. स्टमक में एब्सॉर्प्शन कैसे होगा? स्टमक वॉल इज मेड अप ऑफ अ मेम्ब्रेन. योर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द lipid in nature, phospholipid bilayer membrane. Okay, phospholipid bilayer. So this part is known as the lipid part, or this part is known as the hydrophilic part. This part is known as the hydrophilic part. Okay, and this part is known as the hydrophobic part. ये जो हेड्स है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और ये जो टेल्स होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं. So if a drug want to cross this barrier, अगर ड्रग को इसके क्रॉस करना है, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे आउटसाइड है, यहाँ पे आउटसाइड, यहाँ पे क्या है? इनसाइड. मतलब यहाँ पे इनसाइड है, ओके, और वहाँ पे क्या है? आउटसाइड है, यहाँ पे आउटसाइड है. So if a drug want to cross this cell membrane, so it must be lipid soluble. It must be a lipid soluble. Okay? So lipid soluble drug easily crosses the membrane or barrier. Okay? So this is your cell membrane barrier or plasma membrane barrier. Okay? Now passive diffusion means what? A drug movement. Drug will be absorbed without taking any kind of help, without taking any energy. That is known as passive diffusion. So just movement of drug just because of the concentration gradient or just because of the ionic gradient. ठीक है? Suppose ये कैसे होता है? यहाँ पे एग्जांपल में एग्जांपल के साथ में बताऊँ. Suppose this is known as a membrane. ये क्या है? आपका मेम्ब्रेन है.
ये लाइन क्या है? मेम्ब्रेन. दिस इज नोन एज अ सेलुलर मेम्ब्रेन. ओके, एंड दिस इज अ आउटसाइड द सेल. दिस क्या है? आउटसाइड द सेल, एंड दिस इज द इनसाइड द सेल. ठीक है, इनसाइड द सेल, आउटसाइड एंड इनसाइड. नाउ आपने जीआईटी, ये आपको इसको इसको कंसीडर करो, दिस इज अ जीआईटी. ओके, सो योर ड्रग इज प्रेजेंट इन द जीआईटी इन अ लार्ज अमाउंट. आपका ड्रग मॉलिक्यूल्स, यू कैन से दिस रेड मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट ड्रग. दिस these molecules are nothing but the these dots, blue dots are nothing but the drug molecules. So in the GIT there is a high concentration. GIT में क्या है? High concentration of drug. And blood में क्या है? Low concentration. Blood में क्या है? Low concentration. So if there is a difference between the concentration at both sides, if there is a difference between concentration at both sides, that is known as a concentration gradient. It is known as a concentration gradient. And more will be the concentration gradient, more will be diffusion of drug. So it is also known as passive diffusion, is also known as the ionic diffusion. That is the movement of drug along with the concentration gradient or along with the electrochemical gradient. Electrochemical gradient मतलब क्या? जैसे होता है यहाँ पे ज्यादा concentration है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, वैसे ही अगर यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, यहाँ पे ज्यादा प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है. So plus charge will move from higher plus charge to the lower plus charge. That is known as a electrochemical gradient. Concentration gradient means difference in the concentration up at a both side. एक साइड पे ज्यादा है, एक साइड पे कम है. ठीक है, so जिसमें कम है वहाँ पे मूवमेंट होगा. So as there is a higher concentration at the GIT, the drug will move to the blood without taking any energy. That is known as a passive diffusion. Now एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जीआईटी का कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा. दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम. बट दैट डजंट हैपन. यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता ही नहीं. क्यों? क्योंकि ब्लड कितना है? 6 लीटर है. ब्लड क्या है? मूविंग है, पंपिंग हो रहा है ना उसका. सो व्हाटएवर ड्रग इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जितना भी ड्रग एब्सॉर्ब हो रहा है ब्लड में, तो ब्लड क्या कर रहा है? उसको रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन द अदर कंपार्टमेंट्स. That's why the concentration of drug in the blood is always less. Concentration of drug in the blood is always less as compared to the concentration of drug in the GIT. देखो यहाँ पे important concept है, ये आपके किसी ने भी बोला नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, but यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ. Okay, so concentration of drug in the GIT, concentration of drug in the GIT is high, and concentration of drug in the blood is low. That's why there is a movement of drug from higher concentration to lower concentration. That is known as a passive diffusion. Okay? And now, if there is a 50-50, suppose if there is a 50-50, 50% drug is in a GID, 50% drug is in a blood. So what will happen? There is an equilibrium, so there will be no absorption. But the concentration of drug in the blood is always maintained less, lower concentration. Why? Because there is a rapid distribution of this drug molecule in the whole body, and this condition is known as a sink condition. This condition is known as a sink condition, and that is the driving force for passive diffusion. So remember, passive diffusion is also known as a ionic diffusion. It is the movement of drug along with the concentration gradient or electrochemical gradient, okay, which is the driving force for the movement. Okay, now इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. कैसा क्वेश्चन आया देखो. 90% of drug they are absorbed by passive diffusion. 90% of drug they are absorbed by passive diffusion. As it is question आ चुका है. 90% of drugs they are absorbed by passive diffusion process. GPAT 2018 जाके पेपर चेक कर लो. ठीक है, GPAT 2018 में क्वेश्चन आया है कि 90% of drug they are absorbed by passive diffusion. इंपॉर्टेंट है, लिख लो, नोट डाउन कर लो. ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, सिर्फ आपको क्या है, नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ कच्चा बादाम लेना है. बादाम बादाम कच्चा बादाम, आपको सब मालूम है, सॉन्ग भी मालूम है. ठीक है, तो वो नहीं करना है. आपको क्या है, 90% ऑफ ड्रग दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय passive diffusion, and for the passive diffusion it is governed by the law known as the fixed law of diffusion. Fixed law of diffusion. So आपको क्वेश्चन आ सकता है, fixed law is related with the following process. So diffusion. Okay, question important है, क्वेश्चन आ चुका है.
the process now diffusion process or passive diffusion process is a energy independent. It is a non-saturable, and drugs or compounds having molecular weight up to 100 to 400 electrons, they are absorbed by passive diffusion. Okay, they are absorbed by passive diffusion. Now यहाँ पे देखो concentration of drug in the GIT. Concentration of drug in the GIT is always maintained higher. Concentration of drug in a GIT is always high. Concentration of drug in the GIT is always higher than concentration of drug in the blood. Okay, why? Okay, because concentration of drug in the blood is rapidly distributed. Drug in the blood is rapidly distributed into various body tissue. Therefore, concentration of drug in the blood is always maintained less as compared to GIT. This is known as a सिंक कंडीशन. दिस इज नोन एज अ सिंक कंडीशन. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है, ये आपको किसी ने बोला भी नहीं होगा, इसका गारंटी मेरा है, ये किसी ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया होगा. सिंक कंडीशन किसको कहते हैं? सिंक कंडीशन देखो और एक बार बोलता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वही तो मेरा काम है एक्सप्लेन करना. ठीक है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, यहाँ पे जीआईटी है आपका, यहाँ पे टैबलेट ब्रेक हुआ है, यहाँ पे रिलीज हुआ है ड्रग, क्या है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. Concentration of drug is high in the GIT. So some drug molecule will move to the blood. Concentration of drug in the blood is less. But at a some time, एक टाइम आएगा जिसमें यहाँ से 50% तक यहाँ पे आएगा. तो 50% तक अगर यहाँ पे आ गया तो एब्सॉर्प्शन क्या होगा? सैचुरेशन हो जाएगा, फिर एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ. बट concentration of drug in the blood is always maintained less. Concentration of drug is always maintained less in the blood than GIT because drug molecule in the blood, they are rapidly distributed in the various body compartment. This condition is known as a sink condition. इसको बोलते हैं सिंक कंडीशन. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, देख लो. ठीक है. ओके, सेकंड आता है इसमें पोर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पोर ट्रांसपोर्ट आता है इसमें. तो पोर ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट? Transport of drug through aqueous pores. It is also known as a convective transport. देखो इसको synonyms के ऊपर भी क्वेश्चन आता है. Synonyms के ऊपर भी क्वेश्चन आता है. What do you mean by pore transport? It is also known as a convective transport or bulk flow or filtration. Now this mechanism is responsible for the absorption of molecules or transport of molecules in the cell through a protein channel present in the cell. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पे देखो ये क्या है? प्रोटीन चैनल. प्रोटीन चैनल. सो मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू ए प्रोटीन चैनल इज नोन एज अ पोर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पोर ट्रांसपोर्ट. राइट. नाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द ड्राइविंग फोर्स. मतलब क्या है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? क्या है ड्राइविंग फोर्स? मतलब यहाँ पे वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा. So hydrostatic pressure is a driving force due to difference in the concentration of drug across the molecule, across the cell membrane. That's driving force. Molecular weight less than 100 delta. Drugs having molecular weight less than 100 delta. Low molecular weight drugs. Drugs like urea, water and sugar. Question इसके ऊपर आ चुका है बॉस 3 बार. Which kind of drugs they are absorbed by pore transport? Which kind of drugs they are absorbed by pore transport? Consider the urea, water and sugar. They are absorbed by pore transport. Okay, molecular weight having 100 delta, less than 100. जिस भी ड्रग का less than 100 delta molecular weight है, तो drugs having less than 100 molecular weight, less than 100 delta molecular weight, they are absorbed by pore transport. Example क्या है? Urea, water and sugar. They are absorbed by pore transport. Right? Now, sometimes linear molecule of 400 electron can be absorbed by filtration. Now, GPAT 2021 में क्वेश्चन आया था इसके बारे में, आपको याद रखना है. GPAT 21 में क्वेश्चन क्या आया था? साइज ऑफ एक्वियस फील्ड पोर्स. क्वेश्चन आया था बॉस, साइज ऑफ एक्वियस फील्ड पोर्स. व्हाट इज द साइज ऑफ एक्वियस फील्ड पोर्स? GPAT 2021 में इसका साइज है 4 to 10 एंगस्ट्रॉम.
इसके ऊपर एज क्वेश्चन आया था GPAT 2021. Okay, you have to note. I would like to explain you two processes over here. एक प्रोसेस होता है अपहिल, अपहिल, ठीक है. एक प्रोसेस होता है अपहिल, यहाँ पे मैं अप लिख देता हूँ अप, एंड एक प्रोसेस होता है डाउनहिल. डाउन, ठीक है. What do you mean by uphill and what do you mean by downhill? So uphill means what? Uphill means movement of drug from lower concentration to the higher concentration. यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ऊपर चल रहा है, मतलब यहाँ पे उसका movement of drug from lower concentration to higher concentration is known as a uphill. Uphill. Movement of drug from higher concentration, lower concentration to movement of drug from higher concentration to low, okay, higher to lower, known as the uphill process. And movement of drug from higher concentration to lower concentration. देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं higher is for higher to lower. Movement of drug from higher concentration to lower concentration is known as a downhill. Is known as a downhill. Is known as a downhill. Movement of drug from higher to lower is known as a downhill, and movement of drug from lower to higher is known as a uphill. Is known as a uphill. ठीक है. Now uphill process required energy. Uphill, ठीक है. आपको मान लीजिए आप एक एक टेकड़ी है, आपके पास एक हिल है, हिल के ऊपर बैठे हो, आपको एक पत्थर है, एक 30 किलो का पत्थर, 30 kg स्टोन, यू हैव टू टेक दैट स्टोन अप टू द टॉप ऑफ हिल. एक हिल के ऊपर लेके जाना है उसको, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा. तो अपहिल प्रोसेस नीड एनर्जी, बट वही पत्थर अगर आपको हिल से नीचे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बस उसको धक्का दे दो, वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी. सो डाउन हिल प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. Downhill process does not require energy, but uphill process require energy. Is that clear? Now remaining part we'll see in the next session on Sunday. Sunday को एक next session लेंगे, उसमें next part देख लेंगे. Next part में आएगा आपका बाकी transport वगैरह. Okay? So I hope आपको like session अच्छा लगा है, and if you like this session please write yes in the comment box. कमेंट बॉक्स में यस लिखो ताकि मैं और भी सेशन ले सकूं. ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको एक भी रुपया देना नहीं है. और एक जो गरीब बच्चे होते हैं, जो, क्योंकि मैं भी एक गरीब आदमी हूँ और मैं भी एक बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, और मुझे उनका दर्द समझ में आता है कि बहुत सारे क्लासेस वाले होते हैं 20,000 25,000 रुपए लेके आपसे, तो उनको टैकल करने के लिए, वो बच्चों को हेल्प करने के लिए ये अपने संडे टू संडे बैच लॉन्च किया है. संडे टू संडे 7 to 8 PM 100% आपको ये हो जाएगा बैच, और जितना हो सके सिलेबस मेरे से उतना मैं कवर करूंगा, क्योंकि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर आपको मेरा जो ऑनलाइन बैच होता है, अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हो, ज़्यादा फीस नहीं है, 8,000 फीस है. 8,000 फीस में आपको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ये वाला बैच, तो आपको ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हो. इसमें डेली डेली नहीं, लेकिन वेडनेसडे सैटरडे संडे, वेडनेसडे को होता है लेक्चर, वेडनेसडे 6 to 8 PM, सैटरडे को 6 to 8 PM, एंड संडे को होता है मॉर्निंग में 11 to 1 एंड अगेन 4 to 6 PM. सो 8 लेक्चर्स पर वीक होता है, सब्जेक्ट वाइज, ये सब चैप्टर वाइज होता है. और जो बुक्स है स्टडी मटेरियल वो हार्ड कॉपी में मिल जाता है, ऑनलाइन टेस्ट फीस में हो जाता है. एवरीथिंग इज देयर 8,000 रुपये. आप मेरा नंबर भी ले सकते हो कॉन्टैक्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ये बुक्स भी मिलेंगे आपको उसमें. Okay, if you can join this, and if you don't have money, you can continue with the free batch, that is Sunday to Sunday batch. जो Sunday to Sunday batch है उससे कंटिन्यू करो, मैक्सिमम सिलेबस आपको मैं ले लूंगा जितना हो सके उतना. ठीक है. एंड लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल इन द माय यूट्यूब चैनल, यू कैन आल्सो वॉच दोज वीडियोस. अगर आपने सपोर्ट किया तो मैं लास्ट ईयर का जितना भी पेड वाला बैच था, उसका जो रिकॉर्डेड वीडियोस था, वो पूरे के पूरे वीडियोस में यहाँ पे YouTube चैनल पे डाल दूंगा. अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगा. ठीक है. तो थैंक यू वेरी मच. यस लिखो, एटलीस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू वांट मोर सेशंस यू कैन राइट यस इन द कमेंट बॉक्स.
Thank you, Pooja Nimbalkar. Yes, thank you. See you on the Sunday, next Sunday, 7 to 8 p.m. Thank you.